welcome. Welcome all. Welcome to the final episode of season 1 of Madcaps. आप लोगों ने पर्सनल इंटरव्यूज में भी साथ दिया है एंड अभी पैनल डिस्कशन भी आपने ज्वाइन की है एंड थैंक्स लॉट फॉर दैट एंड आई एश्योर यू आगे भी मैं तंग करती रहूंगी. Don't expect anything less for that. Okay, quickly to introduce our all panelists over here right now. हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट मिस्टर मुबारक सर, जो कि जिनकी ऑलरेडी इंटरनेशनली एक बुक लॉन्च हो चुकी है, बोर्ड इज द लास्ट कान लाइव. इट्स लॉन्च इन मोर देन 50 स्टेट कंट्रीज एक्चुअली. एंड उसके बाद कोविड से पहले ही ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मोर देन 3 times द ब्यूटी पेजेंट फॉर मिस पंजाब, will be under his venture of the Managers Network. And along with that, he also manages his another venture of music records company, which is called Mubarak Records, जिससे उन्होंने और कई आर्टिस्ट को लॉन्च किया है. तो आई थिंक आपसे करियर गोल्स कैसे सेट करने हैं ये हमारी ऑडियंस जरूर सीख सकती है आज. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन. नाउ सेकंड वन, मिस्टर हर्ष कोठारी. दो इंजीनियरिंग के जॉब ऑफर वो छोड़ दिए, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में टोटली शिफ्ट किया. 7 साल से नाउ ही इज रनिंग हिज ओन एनजीओ सक्सेसफुली बाय द नेम ऑफ हर हाथ कलम. एंड आई थिंक जैसे आपने मुझे अपनी पर्सनल इंटरव्यू में बताई थी कुछ डिटेल्स सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जॉब सेक्टर. सो ऐसी चीजें आई एम श्योर जैसे मुझे नहीं पता थी, हमारी ऑडियंस में भी काफी को नहीं पता होगी. एंड उसके लिए बताने के लिए, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने ज्वाइन किया. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव मिस्टर अभय. आई थिंक इनके पास इन्होंने डिकोड कर लिया एक सुपर पावर कि मल्टीटास्किंग कैसे करना है. स्टोरी टेलर, पॉडकास्टर, बिजनेस कंसल्टेंट, एंड उसके साथ साथ इतने अवार्ड्स हैं आपके पास कि जियो सावन का आपने पॉडकास्ट हंट 2021 आपने जीता. गाना के टॉप 10 पॉडकास्टर्स में आप ऑलरेडी हो. टॉप 3 ऑडियो क्रिएटर्स में से आपको ऑलरेडी गिना जा चुका है. एंड बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री, द ऑडियो इंडस्ट्री, जिसके बारे में अभी हमको कुछ आइडिया नहीं होता है, उसके बारे में आप इतना सीख चुके हो एंड यू हैव जॉइन्ड टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट अगेन. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मिस कंगन कांसल, जिनके पास अगेन शी वाज आल्सो एन इंजीनियर एंड उसके बाद जॉब ऑफर था पर वो छोड़ दिया एंड बिल्कुल नई इंडस्ट्री में शुरू से स्क्रैच से शुरू किया. And now being a pastry chef, she's also running her own business in Chandigarh by the name of Sarosa. And I'm sure कि आपने जो details अपनी personal interview में share की थी वो आज भी हमारी audience को काम आएंगी. So thanks again for joining in. Thank you. And with this note, I would like to start our panel discussion. सबसे पहले अगर आप सब बता पाएं कि आपका role exactly है क्या? I'm the founder and the head chef of my own cloud bakery called Sarosa. So obviously I'm an engineer, and after that I became a certified baker. I had done my pastry and culinary course from Gurgaon, a whole year course. And during COVID only, I started a home run bakery, which is now a cloud bakery. So it's going well, and I hope to progress more. That's great. That's great. Harsh. Yeah, so well, my current role is again multi-dimensional, from being an educator to storyteller to story collector, community connect, and creating content, creating curriculum, customized curriculum with children, and supporting children into different schools. And at the same time, the managerial aspect of it, the fundraising part, as well as the admin part. Similarly, the training part, the training of youth towards self-awareness, as well as how to work with children in an inclusive and non-violent way. Great. Thanks a lot for sharing that. Mubarak sir. Yeah, hi. So my role from 2012 till 2015 was that of an employee as an engineer, as a mechanical engineer. And then from 2015 till 2020, I started two companies. One was a music record label, one was an event management company. So my role was that of an entrepreneur. And then COVID completely transformed my role. Right now, my role is that of an author, as a published author. So my English book was published last year, and now it has been translated in Punjabi, and it has been published once again last month, in the month of February. Yes. So there's a little correction. You said it is published in more than 50 countries. Actually, it is published in more than 150 countries. Okay. ऐसे मतलब और achievement है अभी बाकी. जी. Thank you. Okay, Abhay. I think by profession, by education, I'm also an engineer.
Just like Mubarak sir, I'm also a mechanical engineer, started in 2014, worked for a core company, then moved to Pune into core consulting, strategy consulting. And storytelling, writing started happening in 2018 as a hobby. So I'm still working full time in, like a day job that I have. That day job extends from day, evening to late night. So that's the job, and storytelling started happening in 2018 as a hobby. COVID introduced me to podcasting. That's when I got into core audio. And it has now grown from a hobby to a side hustle, more or less like its own job without any money. But the effort and the interaction with the audience and with listeners is as big as, probably what a full-time job would be. That's great. And I think आप सब पहले इंजीनियर रह चुके हो, and I think आज का हमारा ना एपिसोड ही डेडिकेट कर देते हैं इंजीनियर्स टर्न मैड कैप्स सबको इनको ही हम डेडिकेट करेंगे यार. ये क्वेश्चन मैंने वैसे अपनी आप सबकी पर्सनल इंटरव्यूज में भी पूछा है, बट अगेन आज की ऑडियंस जिस तरह से हमारी है स्पेसिफिकली फ्रॉम द आईटी स्कूल, आई थिंक वो काफी रिलेट कर पाएगी इस सवाल से कि आपके यंगर डेज में कभी होता ना कि कोई, आई बिलीव क्रिएटिव लोगों के साथ होता है ये कि यंगर डेज में कभी कोई कंपटीशन, कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है जिससे रियलाइज होता है कि हाँ यार ये तो स्किल थी मेरे में, ये इसमें मैं अच्छा हूँ या मैं इसमें अच्छी हूँ, एंड इसके फिर वही आपकी आज के सक्सेस में कहीं ना कहीं काम या उसने भी कुछ रोल निभाया है. इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट. Yeah, I think I remember that very clearly. I was in my first semester in college, and this is back in 2010. And college auditions hote, right? So you have drama club audition and ye wo. So just like many other people, I was standing in the line of actors, drama club ki audition mein. And that was a very huge line. और मैं बहुत पीछे खड़ा हुआ था. तो मैं I went with enthusiasm, but then I got bored. I said, यार इतने सारे एक्टर्स में मैं कहाँ खड़ा हूँगा, और मैं तो कोई ऐसा शाहरुख खान टाइप भी नहीं हूँ. मेरे आगे तो like I'm not even talking about skill, I'm talking about simply looks. वो उस टाइम की बात थी, right? So फिर मैं उठ के ना वहां से मैंने देखा है स्क्रिप्ट राइटिंग का ग्रुप जो है बड़ा छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, लाइक 7-8 लड़के, 2-3 लड़कियां ऐसे खड़ी हुई हैं. तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, जहां नंबर आ जाता है वहां चले जाते हैं. तो आई जस्ट वेरी वेरी रैंडमली बिकॉज आई गॉट टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग इन दैट लिटरल क्राउड. फिगरेटिवली यू कैन से लाइक आई लिटरली मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राउड. मैं उठ के स्क्रिप्ट राइटिंग में चला गया, और वहां पे उन्होंने एक टॉपिक दिया कि दे सेड दैट ओके यू हैव अ डे टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस वन. दे गिव अ वन लाइन स्टेटमेंट कॉल्ड दिस वर्ल्ड is not big enough for both of us. Is one line ke around you have to create a story, no skit or nothing, just create a story. I came back, I said अरे ये सब क्या writing अपने तो कभी किए नहीं. But उसी शाम को मेस में खड़े खड़े एकदम से एक स्टोरी खनक गई. ठीक है, लाइक मेस में भी लाइन में खड़ा हुआ था, तो लाइन में खड़े खड़े आई थिंक बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ. And a story clicked, and I just went and I wrote. I was pretty bad at English, speaking, writing, grammar was extremely poor. But जैसा आया टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया, सबमिट किया, सेलेक्ट हो गया. And I'm like, I have never written anything in my life, and now I have written something and I got selected also. But I chose not to go. 2 years after this, so this was a part when I got to know that okay, I probably like to write. I have some thoughts that I like to write. The audio component happened about a year later, in 2011, late 2011. I was called in for an interview on All India Radio at that time for a project that I was doing in my university. और उस टाइम पे the RJ while on air वो RJ बोलते हैं कि यार अभय आपकी आवाज में तो बहुत दम है. बट उस टाइम पे मैं दोनों चीजों को ना करेक्ट नहीं कर पाया. इनफैक्ट मैंने तो ये सोचा कि यार मतलब दूसरों के बच्चों की तो सभी तारीफ करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया, लाइक मतलब बचपन से सुन रहे हैं कि अबे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, अबे तुम इसमें अच्छे हो. तो नेवर टुक इट सीरियसली. बट लाइक मेनी इयर्स लेटर इन 2015, 2016 and in 2020 they all came together, and I'm like, oh yeah, people are saying the same thing, and why would a stranger start saying the same thing? उसको पसंद आया होगा तब उसने बोला, वरना मैंने थोड़ी ना उसे मतलब बंदूक की नोक पे रखा था कि भाई तारीफ कर नहीं रही. Right. So I think these were very two clear instances where I realized that there is probably something in my voice and something that I write that kind of resonates with people. Right. I think सही बात है कि इसमें ये चीज भी आ जाती है कि आप सिर्फ बैठे मत रहो आपके कंफर्ट जोन में. If you want to actually explore, just go into different activities and आपको realize होगा कि आप किस किस में अच्छे हो, especially आपके younger days में. Anyone else with a similar story? It happened with me in school. School में इतनी activities होती थी, being from a convent school, you had to bring everything for like a party or something, cakes and all. So I used to get them, and everyone used to be like, oh, it's so good, it's so good. So in 11, 12, I did recognize, yeah, I can go in this field. But then this was
8 years. It's been 8 years. So obviously at that time, no, you have to go and choose a safe career. So I went with engineering. But in college, like every weekend, like I used to bring stuff back to college, and everyone in college, they appreciated it a lot, and they pushed me towards it. Even you. I think वही चीज के बस try करते रहो, explore करते रहो. You'll get to know your own skills. Harsh. I don't recall any incident particularly, but like from the school days as well as in the college, basically my people always used to say that your interests are so wide. I mean, I'm always just curious about learning, exploring, trying out new things, even if I don't like it sometimes. So I've tried like literally everything from the school days, चाहे वो public speaking से लेकर के writing हो, songs हो, music हो, dance हो, art हो, everything. Similarly in college, in engineering field also, like computer hacking से लेकर के robotics सब try कर रहा है. So I think वो जो trying वाली feel, because I always feel कि until and unless I will not try, I will not explore, I cannot be in a position of choosing it. So this has helped me a lot. And similarly, as of now, also in the sector working with children, we have tried so many things for finally coming back to ki, nahi, this is the thing that we are going to follow it. True, so true. Ji, Mubarak sir. Yeah, Bhavni, just like our fellow panelist Miss Kangan said कि स्कूल में बहुत सारी activities होती रहती हैं. तो similarly in the I don't remember exactly the class, but 8th या 9th class में हमें इंग्लिश टीचर ने एक एक्टिविटी दी कि कल को आप लोगों ने एक इंग्लिश की पोएम लिख के लेके आनी है. तो राइमिंग वर्ड्स यूज करने हैं, इंग्लिश में ही लिखना है, जस्ट टू ट्राई कि आप पोएम लिख सकते हो या नहीं, जस्ट टू टेस्ट योर स्किल्स. तो नेक्स्ट डे जब मैम ने पूछा स्टूडेंट्स से, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो मैंडेटरी होमवर्क समझ के कुछ भी लिखा. सो आई एट दैट टाइम रियलाइज्ड कि यस आई कैन राइट. ठीक है होमवर्क है बट बन पा रहा है कुछ ना कुछ. सो नेक्स्ट डे व्हेन टीचर asked the students, so someone said मैंने 4 lines लिखी हैं, someone said मैंने 6 lines लिखी हैं. मैम said okay मुबारक बेटा आपने कितनी lines लिखी है? I said ma'am I have written more than 2 pages. and ma'am's first reaction was बेटा एक line में एक अक्षर नहीं लिखना था. But that was the time when I realized that yes I can write a poem. and वो poem फिर मैम को पढ़ाई तो yes she praised कि वाकई में poem लिखी है, 8-10 stanzas लिख के ले आया बंदा एक ही टॉपिक पे, मीनिंग भी निकल रहा है, तो मतलब कुछ अच्छा ही लिखा है, वो प्रोडक्टिव लिख दिया था. So that was the time when that activity made me realize that yes I can write. I think वहां से कंटेंट राइटिंग और वो राइटर वाली शुरुआत हो गई ना आपकी. आपकी मैम ने भी देख लिया. Yes, officially yes. I think बहुत सिमिलर है एक्चुअली. अगर आप देखें बॉलीवुड के जो लिरिसिस्ट हैं एंड राइटर पीयूष मिश्रा, उनका भी ऐसे ही बचपन में हुआ था. मतलब वो भी 8वीं या 7वीं क्लास में थे और उनको टीचर ने कुछ लिखने को बोल दिया था, तो टीचर वो हिंदी में लिख के लाए थे, तो टीचर एकदम बौखला गए कि यार हमने तो छोटा सा होमवर्क दिया था, तुमने इतनी डेप्थ वाली पोएट्री कैसे लिख दी. तो सर की बात सुन के मेरे को एकदम वही याद आ गया. काफी सो ट्रू. एंड इससे आई थिंक वही चीज सीखने वाली है कि जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग अदर एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन हु वांट्स टू गो फर्स्ट. तो जिस तरह से हमारे आप जो भी पैनलिस्ट है, आपने सबने पहले इंजीनियरिंग की है 4 साल, उसके बाद कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ आपने चूज किया है. उसका कहीं ना कहीं ये भी कारण हो जाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में हमारी फैमिली या हमारे लव्ड वंस दे आस्क कि पहले यार एक स्टेबल पढ़ाई कर लो, उसके बाद एक्सप्लोर करते रहना, जो करना है करना. या फिर वो भी नहीं होता कि एक्सप्लोर कर लो, कई बार होता है कि खुद से यू हैव टू बी दैट you'd have to be that revolution yourself. पर आप आज की यंगर जनरेशन को आप क्या रेकमेंड करोगे कि हाँ ठीक है पहले स्टेबल डिग्री लेना एंड उसके बाद फिर किसी नए प्रोफेशन को एक्सप्लोर करना, वो आप रेकमेंड करोगे, या फिर शुरू से ही इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम फील्ड pursue education in a similar field and then pursue your passion similar profession में? Looking back, मैं अपने पापा से एक्चुअली अभी होली की छुट्टी के टाइम यही बात कर रहा था कि पेरेंट्स आर नॉट फुल्ली रॉन्ग. ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं. अब उस जनरेशन में अच्छा चाहना बस इतना होता था यार, उन्हें बताया गया कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए, सफिशिएंट इच्छा तो होनी चाहिए, तो वो उस नजरिए से देखते हैं. राइट. अब वो जब 30 साल के थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी. आज वो 60 के हैं तो 60 और 30 की वो, लेकिन इट्स अ जनरेशन अपार्ट. सो बट व्हेन आई आल्सो ट्राई टू सी कि अच्छा पॉडकास्टिंग में फ्यूचर बनाए, या व्हेन आई हैव थ्रू पॉडकास्टिंग एंड ऑडियो आई हैव मेट a lot of artists, like met everyone from TVF में जो काम कर रहे हैं, to writers, to many things. Now while all of that looks very enticing as a third party, जब आप बाहर से देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, आपको बहुत enticing लगता है. जब आप उनसे बात करते हैं आपको पता चलता है कि while they are passionate, no doubt about their skill set and passion,
बट इट इज अ डेली फाइट. ओके, मतलब बिकॉज वो इंडस्ट्री जो है, क्रिएटिव इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वो थोड़ा फ्रीलांस मॉडल पे चलती है. वहां पे आपके पास कुछ लोग होंगे जो हायर्ड होंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी जो है वो फ्रीलांस मॉडल पे चलते हैं. एंड जो थिंग्स मैटर करती हैं, जैसे आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको एक एचआर की एक प्रोटेक्शन है, लेबर लॉज की प्रोटेक्शन है, आप एक सर्टेन इनकम आपको आ जाएगी, उसकी एक प्रोटेक्शन है. वो बुरी बात नहीं है. आई मीन उसको ऐसा बना रखा है सबने कि यार ये तो मैं करूंगा नहीं, बट उसमें बुरी बात नहीं है. आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो कवर होता है. तो while our, like I'm saying that our parents said is not wrong in Indian context. If you go to the European and Western context, वहां पे सोशल सिक्योरिटी है, आप कुछ करो ना करो आपको सरकार थोड़े डॉलर्स आपके अकाउंट में डालती जाएगी. तो रियलिटी को ध्यान में रखते हुए आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे लगता है कि पेरेंट्स गलत नहीं है. हाँ, ये कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो कितना मैटर करता है. आप अगर पेरेंट्स कहते हैं बेटा पैसे कमा लो, तो अच्छा ₹1,00,000 महीना ठीक है, 50,000 महीना ठीक है, या 1 करोड़ रुपए साल का चाहिए, राइट? वो आपके ऊपर डिसाइड होता है. उसके लिए माँ बाप पुश नहीं कर रहे हैं. माँ बाप बस ये कह रहे हैं कि बेटा कंसिस्टेंटली कुछ आना चाहिए ताकि उससे दिक्कत ना हो, तुम्हें लाइफ चलाने में दिक्कत ना हो. प्लस आई वर्क एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट ऑल्सो राइट नाउ, सो उसकी एक अपनी अलग फ्रीडम है. मुझे अगर कोई बुलाता है मुंबई, मैं 2 बार नहीं सोचता. मुझे अपनी पर्सनल कैब लेनी है, फ्लाइट लेना है, कुछ लेना है, मैं 3 बार सोचता ही नहीं हूँ कि यार अच्छा मैं बोलता हूँ हाँ चल रही है तो हो जाएगा, ठीक है, इट्स इन माय बजट, राइट? तो पैसा होने की भी एक अपनी एक मतलब एक जॉब होने की या एक सेफ्टी होने की भी एक अपनी एक फ्रीडम है, और ना होने की भी एक है. अगर और आप कुछ एग्जांपल्स लो, मैं बस 1 मिनट और लूंगा और कुछ एग्जांपल्स कवर करूंगा कि अगर आपको पैशन शुरू करना है और आपको लगता है आप यही करना चाहते हो, तो आई थिंक जैसे मैंने तो 28-27 की उम्र में एक्सप्लोर किया ये चीज, और मैं अब आया हूँ, मैं 30 का हूँ अभी. बट अगर आप शुरू में बहुत पहले स्टार्ट कर लो तो आपके पास एक हेड स्टार्ट है, राइट? अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर एग्जांपल ऑफ दैट. देयर इज अ यूट्यूबर बाय द नेम मार्कस ब्राउनली, जो टेक यूट्यूबर हैं, रिव्यूअर हैं इन यूएस. ही स्टार्टेड व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड. एंड बट आप देखो तो वो भी कॉलेज पूरा किया, सब कुछ किया, आज ही इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर एंड ही इज अ यूट्यूबर. सो आई थिंक एक स्टडी करने की खुद भी बहुत जरूरत है. समाज तो बोलता रहेगा, हम भी अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा ये करो. आज जमाना बदल गया, अपनी स्टडी करो, बट ऐसा मत सोचो कि यार माँ बाप कह रहे हैं तो कंप्लीटली गलत है. कुछ एक्सपीरियंस उनका भी लो, कुछ अपना लो, और अपनी अकल बढ़ा के फिर आगे बढ़ो. ये मेरा मानना है. आई थिंक काफी अच्छी बात है कि ऐसे मत सोचो कि तुम्हें बस एक ही टैग के साथ जीना है. एक से ज्यादा टैग्स भी तुम रख सकते हो. इट्स अप टू यू, आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो. फिर दिस इज लाइक एन ऑप्शन if you have that will to actually work for more than one careers. but अगर कहीं एक ही करियर के साथ कंटिन्यू करना हो and then फिर आप शुरू से ही अगर उसमें ही पढ़ाई करो, या फिर एक स्टेबल करके फिर आप दूसरी तरफ से 4 साल लगा के फिर आप दूसरी तरफ से जाओ अपने नए करियर फील्ड में, तो उसमें आप किस तरह से देखोगे इस चीज को? Kangan, yeah. Of course, I have done that. I did engineering 4 years and then I completely changed it. अब सिर्फ एक line है culinary. So now, obviously, I do not regret my decision. At that time, it was a good decision. I stand with it. But right now, what I would say is that do a degree in whatever field it interests you, but get a proper education in it. I would say that, because education is a necessity. Even if you're like a writer or a photography course, anything, you need to get a proper degree, because just having a passion for it isn't going to cut it. You need to know how to run a business, how to everything, all these small things, and that can only be achieved by a proper degree. So yeah, I would say like from the go ahead, you need to have a proper education in that particular field. True. Any other madcap? जी, हर्ष. So मैं I think slightly agree and disagree दोनों ही करूंगा दोनों पैनलिस्ट से भी. Well, I think सबसे पहली बात इसमें there is no right answers कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. Everyone has their own journey. और मुझे बस ये लगता है कि ये जो एडवाइस प्रोसेस है ना, इसको क्वेश्चन करना आना चाहिए. बिकॉज चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे हम अभी पैनलिस्ट भी क्यों ना हो, हम सभी लोग we are always sharing the advices from our point of view. So it is opinionated, it is judgmental, right? So and this is something कि जो भी जिसको जो करना चाह रहा है वो हर एडवाइस को इस नजरिए से जरूर देखे कि उसका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है. So मैं अगर किसी को एडवाइस दूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से ही आ रहा हूँ. So you need to question that, you need to figure out accordingly. And similarly, I feel कि again, it's not the fight for a degree, for me at least, because since I'm into education sector, और
हम लोग तो एजुकेशन सेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट इनटू फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर, वी आर इनटू एन ऑल्टरनेटिव सेक्टर, alternative education, and for us degree just doesn't work. So we'll always focus on ki degree pe mat jao. What is more important is what are you learning out of it. That is the more important. आप degree से कुछ options कम होंगे, लेकिन learning से बहुत options निकल के आएंगे. So focus on yourself, focus on learning, focus on your building your self aware. So true, so true. And I'm really happy कि हमारी panel में ना we have all kind of panelists right now, okay? जिन्होंने yes, they are doing multitasking, which is a great thing, and somebody who has just totally shifted कि नहीं मेरे को एक ही चीज करना है, and somebody who is again in the education sector who can actually give the live point of view कि यार बच्चों को question करो, क्या सीख रहे हो, learning क्या सीख रहे हो. I think similar case was happened with Mubarak sir also, which he explained in our personal interviews. Mubarak sir, if you want to. एक चीज जैसे पहले पैनलिस्ट्स ने बोली कि अपने आप को सिक्योर रखना जरूरी है. उससे क्या है कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं. अगर मैंने पहले 5 साल जॉब की, अपनी सेविंग्स थी, एक्सपोजर भी था, एक्सपीरियंस भी था, उसके बाद मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना इजी हो गया. आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. So that is one thing which helps us a lot. ये मेरा personal experience है, ये चीज मैंने खुद face करी है. I'll just add one example here. KK Menon is a Bollywood actor, right? Now KK Menon always wanted to do acting, but नहीं किया. मतलब he comes from a middle class family from Pune. Like I think he comes from a army family or a defense family. I think उनके father ordnance factory में काम करते थे. तो he wanted to do acting, but he couldn't do because his first thing was like Mubarak sir said कि secure हो जाएं. उन्होंने नौकरी करी, बेसिक किया, MBA करके he started working in Mumbai in a basic advertising firm. ठीक है. अभी वहां पे जाके उनको लगा कि यार मेरे को ये करना ही नहीं है, तो then he dropped everything and he joined the Nasruddin Shah theatre group. Motley I think is the name of the group, and he started from scratch all over there. ठीक है. And वहां से उनकी जर्नी चालू हुई. तो वो अपने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोलते हैं that I was a pauper by choice. उन्हें पता था what is he signing up for, right? तो आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मैं जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं यार हम करना ये चाहते हैं, but I don't want to pay the price for it. अगर या तो आप सिक्योर हो जाओ, तो आप जो सिक्योरिटी लेता है उसे भी लोग गाली देते हैं कि यार तुम तो पैशन फॉलो नहीं कर रहे. जो सिक्योरिटी नहीं लेता वो समझता है कि यार दुनिया तो मेरे हिसाब से चल जाएगी, तो मेरे कदमों में कल सक्सेस आ जाएगी. तो ऐसा नहीं होता है, राइट? यू हैव टू पे द प्राइस. अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम वक्त में उसकी कीमत चुका रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है वो चीज करने का जिसमें हमारा इंटरेस्ट है. अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूं और मैं कूद गया हूं समंदर में सीधा, आई विल हैव टू पे द प्राइस विद द एफर्ट, राइट? अगर आपको फिर वो मेंटल स्ट्रेंथ होना जरूरी है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम, जैसा आई थिंक हर्ष said के एडवाइस क्वेश्चन नहीं करते, राइट? चाहे पेरेंट्स ने बोला या कुछ भी बोला, क्वेश्चन नहीं करते. तो उसके बाद हमें पता भी नहीं है कि यार अगर कल हम गिर जाएं तो क्या होगा, राइट? हम उठे कैसे, हम अपने आप को संभालें कैसे. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. आई मीन कहानी सुनना बहुत आसान है, इलॉन मस्क ये कर दिया, उसकी जिंदगी में एक कैमरा लगा के देखोगे तो वो भी मेंटल स्ट्रेंथ से उसको चाहिए कि यार मेरे बराबर के पीयर जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीद रहा. यो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कितना कर लोगे तुम, राइट? It requires a lot of strength. So I think all the four of us, whatever we said, it's all of four of them combined, and nothing needs to be looked at in silo कि अच्छा नहीं ये हो गया तो मैं कर लूंगा. True. अगर इसी क्वेश्चन पे ही बात की जाए कि जो हमारा एजुकेशन है, सो आपके ही रोल्स में अगर देखा जाए, तो जैसे कंगन से मैं स्टार्ट करूंगी, बिकॉज कंगन ने मुझे अपने पर्सनल इंटरव्यू में कुछ ऐसी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया था जिससे मुझे आइडिया ही नहीं था कि पेस्ट्री शेफ या कलरी के इतने सारी एजुकेशन पॉसिबल हैं. तो वैसे ही अगर आप सब अपने अपने रोल्स के बारे में शेयर करो, स्टार्टिंग विद कंगन. Of course. So even I came across it 2-3 years ago when I wanted to study it. So there's obviously I'll start with India and then we'll go abroad. India mein to there's starting you can go for bachelor's in hotel management. Everyone knows about that. IHM, it's a famous degree course. And then there is culinary courses, there are pastry courses, and nowadays you can just go straight away for bachelor's in culinary arts and pastry arts. That's like what I could have done earlier if I hadn't gone for engineering, but it just started now. So there's diplomas, there's so much going on. Then abroad mein jaake you have so much, like it's just not culinary or pastry, because underneath it if you go in depth in pastry, there's chocolate making, there is sugar making, there's ice cream, there's cake. So they have different courses like bachelor's in chocolate arts, bachelor's in sugar art, because subsidiaries, like in
computer science we go, machine learning, data analytics. It's just same in pastry arts. There's so much going on. So I can see हमारे Madcaps के faces पे भी कि उनको नहीं idea था कि we have because in chocolate making, there's chocolates, there's full chocolate statues made of sugars and all these candies. So it's a whole art, you know, there's a lot of science involved in especially sugar making. And I was so proud, like I knew a little bit of science that I can use here. So I was happy about that. And also, I think इसके साथ growth भी वैसे ही जाती जाएगी अगर आप पहले से उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो. Exactly. So that's why I was saying, like, because I knew when I was studying, I started when I was 22, 23. And then there were people like my fellow colleagues who were 16 or 18. And I was so shocked. I'm like, okay, they are going to go so far ahead because they're just starting now. And then, you know, they're now right now in abroad doing more in-depth courses. So yeah, so that's why I said, like, if you really want it, if you can really go for it, then I would recommend straight away to go for it. True. Because that's what I saw. I could, you know, compare our situations. So as Mr. Harsh said, you know, there's no right way. All our advices come from our own journey. That is my journey. Like I saw what's going on and what I could have done at that age. True. Harsh, if you want to go next. मैं पहले एक disclaimer दे देता हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं करी है. In respect to this stuff, I know a couple of, but I haven't done any degree. So yeah, I mean, with the recent developments in the development sector from past, if you can see from 5 to 10 years, एक डिग्री थी जो बहुत conventional थी, which was Master of Social Work. But as of now, things are evolving and changing, and the best way to enter into this sector as of now is a fellowship one. और पिछले कुछ सालों से fellowship is actually at a very boom. TFI brought up, but for TFI के बाद there are a lot of fellowships with focus on different things. कुछ हैं जो systems को सुधारना चाहती हैं, government systems को सुधारना चाहती हैं. गांधी fellowship है, पंजाब यूथ लीडरशिप fellowship है. कुछ है fellowships जो आपको एक मुद्दे, एक प्रॉब्लम के ऊपर सभी stakeholders के साथ engage करना चाहती हैं. कुछ है रूरल मैनेजमेंट में जाना चाहती हैं, SBI की यूथ फेलोशिप है. सिमिलरली कुछ है जो सिर्फ एक तरह से डिग्री की तरह अशोक इंडिया फेलोशिप है जिसको बोल रहे हैं, वो भी है. सिमिलरली तो एंड इट रेंजेस फ्रॉम 6 months to 2 years, 3 years down the line, depending upon how intense you want to actually work with. It's a beautiful journey for a lot of people who are also into some smaller specific fellowships. जो कि जैसे काइंडनेस यूथ लीडर्स की एक फेलोशिप है NGIP, यूनेस्को NGIP की. एंड देन आई वाज पार्ट ऑफ दिस काइंडनेस लीडर कॉन्फ्रेंस, और उसमें इंटरनेशनली जो एक प्रोग्राम था कि जहाँ पे वी वर 36 यंग लीडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, फोकसिंग ऑन कि हमने जिस वर्ल्ड को बहुत कंपटीशन में धकेल दिया है, हाउ कैन वी ट्रेस इट बैक एंड फोकस मोर ऑन कोलैबोरेशन. ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप कल्चर जो है कि सिर्फ मैं ही करूंगा और मेरा ही आइडिया स्केल होगा, टू शिफ्ट टू दैट थिंकिंग कि आई वांट टू प्रमोट अ गुड हेल्थ, सभी कर सकते हैं. व्हाई टू कॉम्पीट विद ईच अदर, सभी के लिए हो सकता है. So these are some of the fellowships, and then there are some certain institutes, ISDM है, TEST है, who has very specific programs of even community programs, children and development program. So इस टाइप के बहुत सारे programs ये भी हैं. And then the third option is which are very free open courses or kind of stuff, जो कि retreats हैं, courses हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं. You can openly volunteer, you can openly go on a journey. Jagriti Yatra is once a journey that I was being a part of. 15 days we were just on train, और ट्रेन्स के थ्रू हम लोग पूरे इंडिया की ऐसी जगहों पे गए थे, ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स से मिले थे कि to see what kind of models they have been able to build. So yeah, lot of immense opportunities. There's so much. कितना कुछ होता है, बट हमें आइडिया भी नहीं होता कि इतना सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही, जैसे और कंगन ने जैसे पेस्ट्री कलरी के रोल में बताया, वैसे मुबारक सर और अभय, anyone of you also want to share? जी, So we are talking about degrees over here. The thing is, जो रोल इस टाइम मैं कर रहा हूँ राइटिंग का, उसके बारे में बड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा था, बिल्कुल ही जब मेरी शुरुआत थी, आई थिंक मैं 3rd 4th में था, तो उस टाइम मुझे पापा ने ये बात कही थी कि मैंने जनरली पूछ लिया ये राइटर कैसे बनते हैं. तो व्हाट ही सेड वाज कि राइटिंग की स्ट्रेंथ अपने आप ही स्किल पता लगती है, राइटिंग की कोचिंग नहीं मिलती कहीं से. इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, वो विद टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप में लिखने की कला है.
This is not something that can be taught. Certifications की बात करूं तो recently I was there in Dharamshala Literature Festival. So this is one of the certificate which I was given over there as an author to speak on the title The Art of Writing. And then one of the biggest achievements which you have already mentioned is one book which is published in English, and one is the second book which is published in Punjabi, the translation of the same book. So these are the achievements, but specifically certificates related to my profession, I don't think they are even available out there. जी 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 आई थिंक आपके लाइफ लेसन सबसे ज्यादा जरूरी होंगे कि एक रोल से नेक्स्ट रोल, फिर से नेक्स्ट रोल, फिर कंटिन्यूअसली चेंज करना विदाउट कीपिंग एनी कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, वो चीज मतलब करियर गोल सेट करना आपसे सीखना, वो लाइफ लेसन्स काफी जरूरी होंगे. But the very important thing जो शायद मैं पहले मिस कर गया, that is research. किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी के बाद कोई नया रोल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पहली म्यूजिक कंपनी जब मैंने शुरू करी उस टाइम पे मेरी रिसर्च कम थी. I would say उस टाइम पे I was a fresh entrepreneur and मुझे नहीं उसका अंदाजा था कि रिसर्च कितनी जरूरी है. दूसरी कंपनी जब मैंने शुरू की तो मैंने ज्यादा नॉलेज ली, ज्यादा टाइम स्पेंड किया रिसर्च पे. That was obviously a far better successful company than as compared to my first one. And जब मैं ऑथर बना हूँ, 5 साल में मैंने एक बुक लिखी है और उसके बाद 1 साल सिर्फ पब्लिशर्स पे ही रिसर्च करी है कि सेल्फ पब्लिश करना हो तो क्या होना चाहिए, कोई पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सर्विसेज हमें देते हैं. सो बहुत ज्यादा रिसर्च करी. And again, this is far more successful. This role is far more successful than the first 2 roles. So research बहुत ही जरूरी है. Research के बिना nothing is possible. एंड आई थिंक हाँ ये चीज, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस थी उन्होंने काफी उन्हें फॉर्म्स में भी बच्चों ने ये जरूर लिखा था कि दे वांट टू नो हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड ये चीज उनको नोट करनी चाहिए कि रिसर्च इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू फोकस ऑन. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके रोल में जो स्किल्स, अगर आप कोई ऐसी एक स्किल आप सोचो जो आपकी पर्सनल स्किल थी बट जो आप सोचते हो कि आज की आपकी सक्सेस में इट हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, तो वो एक स्किल जो हमारी यंगर ऑडियंस जो है वो शुरुआत के दिनों से अपने उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं अगर वो आप ही के रोल में आगे बढ़ना चाहती है. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. अब ये व्हेन आई से कम्युनिकेशन देयर आर 10 मोर फैसेट्स टू इट एंड पीपल बी लाइक हाँ यार बातचीत तो हो जाती है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं अगर कहानी लिख दिया तो हो गया ना, मैंने बता तो दी, क्या बात है. बट हम ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कन्वेइंग व्हाट आई हैड इन माय on my tongue and I'm just throwing it out loud and let people understand. If an effective communicator is the one who can give structured information so that the receiver's mind can process it in the way that the communicator desires. That's the important line. ठीक है. तो communication इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारे YouTube videos देखेंगे और the one which stand out versus the ones which don't stand out is the fact that okay, there is a subjective layer also, right? But आप कोई भी कैटेगरी ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल उठा लो, लाइफस्टाइल व्लॉग उठा लो, कुछ भी उठा लो, एक चीज जो कॉमन आती है वो है या तो बात बहुत अच्छी कन्वे करी गई या बात बहुत अच्छी तरह से कन्वे करी गई, right? And that's it. Sometimes okay, money can buy all the flashy stuff and fancy equipment, but it can never balance out the storytelling that you are doing in that video, in that podcast, in that presentation, anything, right? So I think communication is the most underrated skill in the industry, but it is the most important. आप आज C++ कर सकते हैं, कल आप जैसे मुबारक सर की जर्नी है, अगर आप आज नौकरी करते थे, कल आप एंटरप्रेन्योर बन गए, थ्रू आउट दिस जर्नी उनके स्किल सेट बदलते गए क्योंकि the various places he went, but the one thing that stayed is communication. भाई बात तो कर ही रहा है ना आदमी तब भी और आज भी, तो वो बहुत जरूरी है. सही बात है. एंड आई थिंक ये वाली स्किल जो कम्युनिकेशन है, दिस इज लाइक द बेस ऑफ नेटवर्किंग, और यहीं से आप सभी के ही रोल्स में वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है. I was very bad at networking. मेरे यही सारे नीड्स थे. एक एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने अपना आइडिया 60 सेकंड में नीचे से ऊपर टॉप फ्लोर तक एलिवेटर की जर्नी में किसी को नहीं समझा पाए, that's the challenge, but that's the challenge you should aim for. Okay, करते में सब जर्नी निकल जाती है. So communication from my mind. अपनी बातों को इजी, आसान भाषा में, आसान शब्दों में बता पाना. Kangan, any other skill you think which is contributable to your role? Oh, my role, I think I would say practice, not giving up after first or second trial. You have to stick to it at least for a little while.
because of YouTube and all the social media, we all see these, videos popping up when everyone is making stuff in 60 seconds or whatnot. That's not what actually happens. That's like a stat. If the person is making something in 60 seconds, it took him like 2 or 3 days earlier to perfect that 60 seconds. So obviously you need to keep practicing on. That's what I say. Like I always have to practice. Nothing just comes easily to anyone. You need to practice, not giving up. It's not like kuch banaya, nahi bana, okay, I can't do this, I have to move on to something else. You have to stick to it for a little while. Right. You have to be consistent. Yeah, you have to be consistent with your work. True. I think ये काफी जरूरी skill है. True. Harsh, any point you want to share? Well, I think it's more with the attitude, I would say, rather than skill, because skill can be acquired. So with respect to attitude, I would always do it in a like 3H thing, which I follow, that head, heart, and hand. So head is which, knowing about it, questioning it, researching about it. Heart is connecting with it with an emotional level, and also figuring out how to remain emotionally safe. And hand is doing it, not just thinking it. So just getting into it, get your hands dirty. So these 3 should be in sync. True. That's really useful. काफी कम शब्दों में, I think ये communication वाली बात हो गई. काफी कम शब्दों में इन्होंने काफी अच्छी चीज बता दी. Thank you for that. Mubarak sir. Yeah, I believe communication and networking. You have seen it firsthand. We have worked a lot. So communication and networking is something जिसके बिना हमारा खुद का काम तो चल ही नहीं सकता. Ultimately हमने, just like Mr. Abhay said, के ultimately हमने लोगों से deal तो करना है ना. We have to communicate with people. We have to communicate, and networking strong हो तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है. So there are a lot of things जो networking के साथ बहुत easy हो जाती हैं. कहाँ सारा काम हमने खुद करना है, कहाँ पे हम एक WhatsApp मैसेज ड्रॉप करें अपने ग्रुप में और हमें immediately कोई रिप्लाई आ जाए कि ये काम यहाँ से easily हो जाएगा या कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे बेटर प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, 1 सेकंड में काम बन जाता है. So networking and communication skills are very, very important. इसके बिना a person cannot be successful, I think. True. And I think communication, जैसे majority madcaps ने वही बात बोली, and उसकी शुरुआत इस तरह से हो सकती होती है कि आप झिझक मत रखो मन में, बस करो, take that first step. We want to reach out to someone, just take that first step. I gave an example already. जैसे मैंने कैनवा की एग्जांपल दी. अगर ऑस्ट्रेलिया में एक 19 साल की पढ़ने वाली स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर रही है अपनी डिग्री और लोगों के पास अपना कंसेप्ट लेके जा रही है, अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो पिच कर ही नहीं पाएगी अच्छे से. बट 19-year-old ड्रॉप आउट अगर आज के डेट में दुनिया में बहुत जाना माना नाम है, विदाउट दैट स्पेसिफिक डिग्री जिसमें उन्होंने एडमिशन ली थी, वो कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ना होती, कॉन्फिडेंस ना होता, शी वुड हैव बीन नोवेयर. Communication skills and networking, I believe, they are very, very important. True. Okay, so एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ना हर मैडकैप की जर्नी इजी नहीं होती, शुरुआत में कहीं ना कहीं हार्डशिप्स आती हैं, बट कोई ऐसा कोट या कोई मूवी, ऐसा कोई गाना देख के को जो आपको मोटिवेट कर देता है आपके स्ट्रगल के टाइम पे, ना आप बोलते हैं नहीं अब तो भाई तुम्हारा वॉरियर, अब तो सब हम कवर कर सकते हैं, अब तो कुछ भी आ जाए जिंदगी में देख लेंगे, क्योंकि girls are always queen, so Kangan. But any quote or movie or song? I don't think so. Like MasterChef always motivated me. I'm like, okay, ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ. So that was always a motivation. I like watching them. Like, yeah, man, they can make this so beautiful. Even I think I can do that. So that was always motivating. No particular song or TV show or something like that. Just MasterChef Australia, to be precise. I think so. Anybody who wants to pursue career in culinary, MasterChef देखना शुरू कर दो. It's not accurate, but it's very motivating. True. Any other match? So I think मेरा mix and match of everything है. Sometimes I listen to, in general, when I listen to songs which have little depth. जैसे उड़ान मूवी है, तो उड़ान मूवी मुझे उतनी पसंद नहीं है जितनी, मतलब उतनी दिल को पसंद नहीं है जितनी मुझे उसके गाने छू जाते हैं कभी कभार, right? And the range of all the songs is everywhere from failure to rock bottom to success. तो थोड़ा वो है, या फिर anything which is light hearted, वो पसंद आ जाता है. Few people I follow for general inspiration in life. तो Naval Ravikant हो गया, he's a venture capitalist, but he talks about life in a very balanced manner. Like he's not like Gary Vee who just keeps shouting at people कि जाके काम करो. He's a little bit more practical because he has his own venture. So वो business plus spiritual उसकी एक messaging है. Quotes के मामले में I usually there are many quotes, like once again
बट 2-3 चीजें जो जो स्टैंड आउट करती हैं, उनमें से एक है अ क्रिएटिव एडल्ट इज द चाइल्ड हु सर्वाइव्ड। तो ये ये मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था, आई थिंक आज से 5-6 साल पहले, एंड इट हैज जस्ट स्टक विद मी, एंड इट्स बीन देयर लाइक फॉर लाइक इट्स इन माय सिग्नेचर एंड एवरीवेयर, लाइक क्रिएटिव एडल्ट इज द चाइल्ड हु सर्वाइव्ड। काफी डीप मीनिंगफुल आपने ये लाइन बताई। आई थिंक हर्ष आपकी उड़ान वाली बात पे कहीं ना कहीं एग्री कर गए थे उड़ान के गाने से। हर्ष? I think for me, the range of things, mostly solo traveling, which I actually love a lot. But yeah, there is one thought which carries with all these things, traveling, reading, or movies. But one thought is that to remind yourself that we always have a choice. We always have a choice. हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि in difficult times we just don't give ourselves a choice और हम खुद को ही बेचारा लेबल कर देते हैं। हमसे ये नहीं हुआ क्योंकि ये हो गया। So वो एक thought that we always have a choice. It could be difficult one, but we always have a choice. So beautiful, so true. जी, मुबारक सर, आपकी क्या है go to quote, movie या song? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मूवी बफ एट ऑल। अगर मैं याद करूं लास्ट टाइम अगर मैंने पीवीआर में कोई मूवी देखी थी, इट वाज इन 2016। ओ भाई साहब, उसके बाद मैं कभी थिएटर में नहीं गया। सो आई एम नॉट अ मूवी बफ एट ऑल। यस, आई लव रीडिंग कोट्स, मैं लिखता भी हूँ कोट्स, तो आई लव रीडिंग कोट्स एंड वॉरेन बफे के कोट्स। आई बिलीव कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ किसी भी तरह का कोई खुद का काम करना है, वॉरेन बफे कोट्स आर द बेस्ट कोट्स। एंड one of the quotes जो मैं हमेशा ही याद रखता हूँ, that is like if you don't find a way to earn money while you sleep, so you will work until you die. It goes something like this. So ऐसे quotes मुझे बहुत motivate करते हैं कि हम सो रहे हैं और पैसा आ रहा है. That's what he means to say, right? So if you don't find a way to earn money till while you are sleeping, you will work till you die. So ऐसे quotes मैं पढ़ता हूँ और कभी-कभी पढ़ पाता हूँ, otherwise मैं खुद ही लिखता रहता हूँ और बस That's it. I think इस नोट पे काफी हमारे मैडकैप्स ने सार दे दिया अपनी जर्नी का, कि किस तरह से किन किन चीजों पे हमारी यंगर ऑडियंस फोकस कर सकती है, किन स्किल्स पे, किन चीजों से इंस्पिरेशन ले सकती है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। स्पेशल बच्चों ने, iTeach के बच्चों ने हमारे साथ ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर किए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है धनेश्वरी का, उसके लिए शिवांगी अनफॉर्चुनेटली couldn't join because of some last minute commitments, and but Dhaneshwari ka just said the question. So her goal is so my dream profession is to be a makeup artist because I love to do makeup and want to make a career in it, and it's my passion. Dhaneshwari, agar aap audience mein ho, it's a great thing. You are in 11th class and you know what your passion is. It's a beautiful thing. Don't stop yourself ever. Keep working for this. And you wanted to know about the courses available for makeup artists. I'll recommend you to watch the episode of Shivangi Kumthekar on our Madcaps Instagram page, and aapko usme sari details mil jayengi. Now coming to the next question, which I believe is for Mubarak sir, from Bobby from first year of Bachelor of Science. So उनका goal है to be a robotics engineer and an entrepreneur, पर उनका question था about writing, how to get ideas and be creative in writing a book. Well, the first of all, जो भी आप सोच रहे हो वही लिखना जरूरी है. A lot of times what happens is हम divert हो जाते हैं. Sometimes we start writing, let's say for example मैं fiction लिख रहा हूँ, एक महीना मैंने 2 या 3 chapters एक fiction story पे लिख दिए, उसके बाद कोई मूवी देखते हुए या कोई और बुक रीड करते हुए या जनरली मेरे माइंड में कोई और आइडिया है, देन इट क्लिक्स के यार इस पे मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ. द माइंड डाइवर्ट्स, हम कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं. दैट इज नॉट सपोज टू हैपन. The moment your mind diverts, sorry, but वो पहला वाला प्रोजेक्ट पे आपका स्पार्क खत्म हो. First thing is connect yourself to your topic. Second thing is again research. शायद आप social cause पे लिख रहे हो, शायद आप reality पे लिख रहे हो. You may write about your own life. You may write about fiction. There are a lot of things. बहुत से genres हैं जिन पे आप लिख सकते हो. But to be a successful writer, you have to avoid diversions. You have to avoid distractions. Second thing is stick to your topic. And third thing again, जो मैंने पहले भी बोला, research. बिना research के हम fiction भी नहीं लिख सकते. अगर मैंने 5 साल में बुक लिखी है जो hardly 100 pages की है, तो कहने वालों को बड़े easily कह दिया जाता है कहने वाले की तरफ से कि यार 5 साल लगा के 100 ही पेज लिखे. उसके पीछे कितनी research है वो बताना it is impossible. So if you want to become a writer, research तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना there is no survival at all. But then stick to your topic. सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है. बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि यार कितनी टाइम से लिख रहा है, अगर नहीं पूरा हो रहा छोड़ दे, कुछ और लिखना शुरू कर.
There will be a lot of advices. हर बंदे का अपना opinion है. You know what you are doing. You know what you are doing. So stick to that. अपने आप पे confidence रखो and अपना successful हो जाओ. उसे complete करके उन लोगों को जरूर गलत prove करो जो कह रहे थे कि आप कर नहीं सकते, और जो आपको support कर रहे थे, जो motivate कर रहे थे, उनके लिए काम करना और भी जरूरी है, because those were the ones who trusted you. True, so true. Okay, next question is from Akash for Harsh. So his goal is that he wants to go in social development sector and understand societal wellness and well-being better. Unka question hai, for society needs, what can be the main model for the wellness of society? Understand yourself first. Wellness goals, mental health, yeah, emotional safe for others will only come first if you are able to do it with yourself. If you are not in a resilient zone and you get triggered by a lot of things, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो नहीं हो रहा तो मुझे गुस्सा आ रहा है, you cannot actually work on the wellness thing itself. So you need to practice it with yourself. So whatever be your journey you want to do, and whatever why it is you want to do, first realign in with yourself. Why you want to do, and what is it that you will be able to do with yourself. उसके बाद हम दूसरों के आए. True. If anybody has any questions and they want to ask our panelists, they can go ahead. Navi on the side. Hello, Madcaps. Hello. Hi. So I've been following every interview since the starting, and I'm very intrigued. I'm very motivated and inspired by you all. So I was just waiting for this time to ask some questions. So basically, I'm an engineer, right? And I'm planning for a career in fitness consultant and educator. So I wanted to ask every one of you Madcaps, sir, that there's a quote by Aristotle, well begin is half done. So when do you know when to begin and begin well? That's a good question. Anyone are of Madcaps from the journeys? Sure. I think there is no specific time to begin. Honestly, Navi, that's a very appropriate question. Everyone thinks whether shall I start right now or shall I wait for a little more time. जितनी भी research करते रहोगे आपको कुछ ना कुछ नई knowledge मिलती रहेगी. But the right time to begin is when you have sufficient knowledge to begin your specific work. Start small. ये नहीं है कि पहले ही हम बहुत ज़्यादा invest करें. That is what I believe. That's how I started. So जो specific field आपने mention करी, उसके influencers या उसमें successful people जो हैं, उनको जरूर follow करो, उनकी journeys सुनो, देखो YouTube पे आजकल बहुत सी resources हैं जिन पे we can gather a lot of information जिन्होंने already वो journey cover कर ली है. So the best time to begin is when you have sufficient knowledge about your work जो आप start करना चाहते हो. Once you start, then in your journey, stay consistent with your efforts. There are a lot of ups and downs. जब ups आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. Downs कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं because we are very passionate about something that we are starting. So be prepared mentally, physically, in every possible sense. Be prepared to survive through those downs. Self motivation बहुत जरूरी है. Be consistent with your efforts, and the best time to begin, according to me, is when you have sufficient knowledge to start your particular work that you are going to start. True. I think ये 3 step आ गए. Research, then take the first step, don't worry, and then be consistent. True. Okay, I think on this note, we can end today's panel discussion. काफी ज़्यादा helpful, काफी ज़्यादा informative, and all of you gave your time, told about experiences. काफी ज़्यादा grateful हूँ मैं इस time पे, and I wish you guys all the success. I hope you also enjoyed the session and all the discussion among all the Madcaps. I believe कहीं ना कहीं Madcaps भी एक दूसरे से inspire हो गए होंगे. They will also get to know about each other's journey. So, like the audience and like me, thanks a lot for joining in and joining the session. Thank you.